Mr. Ramesh, a resident Indian, has derived the following income for the previous year relevant to the assessment year 23-24. Income from profession in India 2,44,000. Income from profession in country A 4,50,000. Okay. Compute Indian tax liability of the assessee assuming that as per treaty between India and country A, rupees 4,50,000 is taxable in India. However, foreign tax can be set off against Indian tax liability. So, computation of taxable income, total income, and tax liability of Mr. Ramesh for assessment year 23-24. So, how to do this? 2,44,000 is my income from profession, and 4,50,000 is income from profession from other country. So, total मैंने income add कर दिया, I got 6,94,000. अभी ये 6,94,000 जो है इसमें से कुछ डिडक्शन है तो वो निकाल दो, तो आप नेट टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लो। इस पे आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। राइट, मिस्टर रमेश इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट के हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो 6,94,000 है ना, 6,94,000 यहाँ पे 0 to 2,50,000 तक ज़ीरो रहेगा, नो टैक्स रहेगा। फिर 2,50,000 से 5,00,000 रुपीज़ तक आपका कितना आएगा? 12,500। कैसे आएगा? 2,50,000 है, सो ऑन 2,50,000 आप 5% के हिसाब से देखें तो 12,500 आ गया। अभी एक्सेस कितना है? 6,94,000। तो 6,94,000 माइनस 5,00,000 रुपीज़, ठीक है, ये कितना हो गया? 1,94,000। 1,94,000 इंटू 20%, ये कितना हो गया? 38,800। ये हो गया 51,300। ठीक है, आपका टैक्सेशन रेडी हो गया। अभी इस पे आपको सेस कैलकुलेट करना है, तो सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटू 4%। बाय डिफ़ॉल्ट 4% के हिसाब से सेस तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये टोटल आप करेंगे तो आपको टोटल क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 53,352 रुपीज़। फिर क्या आएगा? यहाँ पे रिलीफ आएगा। ओके, रिलीफ आएगा मतलब क्या? नहीं समझा। यहाँ पे क्या बोला है? टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 4,50,000 पे 5% के हिसाब से टैक्स पे किया है। तो आप एक काम कीजिए, 4,50,000 का 5% कैलकुलेट कीजिए, तो जितना आएगा उतना आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप एग्जेम्प्ट ले रहे हो। ठीक है, 22,500। तो 4,50,000 का मैंने क्या कर दिया? 4,50,000 का मैंने 5% कैलकुलेट कर लिया, तो 22,500 आया। ओके, अगर मैं इसको इससे करूँ तो 30,850 रुपीज़ मुझे पे करना है। ओके, यहाँ तक। हमने जभी चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि सेक्शन 90 मतलब क्या? तो सेक्शन 90 मतलब बायलैटरल रिलीफ वाला है, 90 एंड 90A। 91 यूनिलैटरल है, मतलब हमने बायलैटरल रिलीफ का अभी किया। राइट, बायलैटरल रिलीफ का अभी हमने सम ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सम हो गया, अभी हम सेकेंड इलस्ट्रेशन लेते हैं। Sri Anuj, an ordinarily resident in India, provides following details of his income for previous year relevant to the assessment year 23-24. Income from India, income from country Z, investment in PPF. Further, it is to be noted that India has avoidance of double taxation agreement with country Z. According to the said agreement, income is taxable in the country in which it is earned and not in the other country. However, in the other country, such income can be included for purpose of computation of tax rate. Okay, so what they are mentioning here, फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है 20% के हिसाब से, कंप्यूट इंडियन टैक्स लाइबिलिटी। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अनुज फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो आपने आपका इंडिया में इनकम कितना है? 3,40,000। कंट्री जेड में इनकम कितना है? 2,00,000 रुपये। ठीक है, दोनों को आप टोटल करेंगे 5,40,000 आएगा। क्वेश्चन में मेंशन किया है ना, इंडिया में इनकम है वो 3,40,000 है, कंट्री जेड में जो इनकम है वो 2,00,000 रुपये है। ठीक है, तो आपने टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया और वो है 5,40,000।
इसमें से आपने पीपीएफ के अगेंस्ट पैसे पे किए तो 10,000 रुपीज़, आप वो भी निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा नेट टोटल इनकम दैट इज टैक्सेबल इनकम 5,30,000। ओके, 5,30,000 पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, अनुज इंडिविजुअल है तो 5,30,000 पे टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? 0 to 2,50,000 पे नील हो जाएगा, फिर 2,50,000 to 5,00,000 रुपीज़ आपका कितना हो जाएगा? 2,00,000 बचा ना, दोनों का डिफरेंस ले लो, 5,00,000 और 2,50,000 का, 2,50,000 बचा, इंटू इंटू कितना, इंटू 5%, तो 12,500 आएगा। अभी आप कितना पे कर रहे हो? 5,00,000 के ऊपर कितना है? 30,000, तो 30,000 पे 20% के हिसाब से टैक्स पे कर दो, 6,000 आएगा। तो 12,500 प्लस 6,000 दैट विल गिव यू 18,500। ठीक है, 18,500 इस पे सेस लगाएंगे, इस पे 4% के हिसाब से सेस लगा देंगे, तो 4% के हिसाब से सेस लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 19,240 आपका टोटल इनकम। ठीक है, टोटल, सॉरी, टोटल टैक्स पेएबल। अभी मुझे रिलीफ कैलकुलेट करना है, वापस ये सेक्शन 90 वाला ही है, तो मुझे रिलीफ कैलकुलेट करना है। तो रिलीफ कैसे मैं कैलकुलेट करूँगी? 20% मैंने टैक्स पे किया है और मेरा इनकम कितना है? 2,00,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? मैं यहाँ पे रिलीफ कैलकुलेट करूँगी। तो रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 19,240 मैंने टैक्स पे किया है, ये कितने पे टैक्स पे किया है? 5,30,000 इनकम पे, तो मैंने रेशो निकाल लिया 3.63। ठीक है, तो 3.63 के हिसाब से आप 2,00,000 जो आपका बाहर का इनकम है उस पर कैलकुलेट कीजिए, 7,260 आएगा। तो इतना ही क्रेडिट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 19,240 माइनस 7,260 तो आपका 11,980 आएगा। ये आपका क्रेडिट मेथड है, चेक कर लीजिए। फिर हम दूसरा लेंगे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ऊपर ऊपर हमने सेक्शन 90 में स्टडी किया ना, क्रेडिट मेथड एंड बायलैटरल वाला है ये, दैट्स व्हाई आई वेंट देयर टू शो यू। यहाँ पे मेंशन किया ना एग्जेम्पशन मेथड, क्रेडिट मेथड। तो एग्जेम्पशन मेथड ये नीचे जो है ये तो थ्योरी पार्ट है, आप यहाँ तक ही स्टिक कर सकते हैं। एग्जेम्पशन मेथड, तो दूसरे कंट्री में मैंने जितना पे किया पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। क्रेडिट मेथड, थोड़ा ही क्रेडिट मिला मुझे, वो हमने जो कैलकुलेट किया 3.63% के हिसाब से उतना ही क्रेडिट मिला, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, काफ़ी इजी और स्कोरिंग है, यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर वेरी गुड मार्क्स। सो एंड इट इज़ वेरी इजी। राइट नाउ इट मस्ट बी लाइक थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी काफ़ी इजी है। एंड 30 मार्क्स, 32 मार्क्स, 33 मार्क्स, आप पास पेपर्स देखेंगे 31 मार्क्स, 32 मार्क्स, 33 मार्क्स, ऐसे ही पूछा गया है। 30 मार्क्स, 25 मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स ऑन करके देते हैं। चैप्टर में करना कुछ नहीं है। Next, Mr. Saha, a resident Indian, has derived the following income for previous year relevant to assessment year 23-24. Income from profession 3,74,000. Royalty on books from foreign country 5 lakh rupees.
compute Indian tax liability of the assessee, assuming, okay, assuming that India does not have any agreement with country Y. Okay. So here India doesn't have any agreement with country Y. तो 3,74,000, 5 लाख, फर्स्ट आपका जॉब क्या रहेगा, यू फाइंड आउट योर ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपने ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया। अभी ऑब्वियसली आप डिडक्शन चैप्टर 6 से देखेंगे तो यहाँ पे 80 QQB रॉयल्टी इनकम पे 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन है, तो वो मैंने बेसिक एग्जेम्पशन निकाल लिया। तो मुझे कितना मेरा नेट टोटल इनकम आया, 5,74,000। अभी मिस्टर साहा एक इंडिविजुअल है, तो 5,74,000 के हिसाब से हम इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5,74,000 कितना हुआ, 5,74,000। तो अगेन 0 to 2,50,000 क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट 2,50,000 का रेशो आएगा, राइट, -5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे 12,500 आ जाएगा, और ऊपर है 74,000 एक्सेस। तो 74,000 पे आप अगेन 20% के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, आपको 27,300 आपका टैक्स आएगा। इस पे सेस ले लीजिए, ओके, यू विल गेट 28,392। नाउ वट एवर अमाउंट ऑफ टैक्स यू आर पेइंग, दैट इज़ 28,392, वो टोटल नेट टोटल इनकम का आप रेशो ले लीजिए। ठीक है, आपको आ जाएगा 4.95। ये क्या है, ये यूनिलैटरल रिलीफ हम कर रहे हैं। ये जो सम है सेक्शन 91 के रिलेटेड है। वो क्या बोलता है, इंडियन एवरेज टैक्स यार फॉरेन एवरेज टैक्स। फॉरेन एवरेज टैक्स मतलब क्या, क्वेश्चन में ऑलरेडी 20% दे के रखा है। तो फॉरेन एवरेज टैक्स या इंडियन टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया है, वो दोनों का विच एवर इज़ लोअर वो आपको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टडी कर मतलब कम देख लीजिए, फिर हम इलस्ट्रेशन 4 पे जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। हेलो। Yes, so here no, we are calculating as per Indian tax provisions. Hello, you can hear me? Hello. Yes. So here they are calculating income as per Indian tax provisions.
Sorry, they have not assumed, they have given you in the question, no, 20% tax. They have not assumed, given to you in the question. Yes, only India is giving relief, that's why unilateral. Arvind, a textile merchant and resident Indian, is doing business in India and abroad. During previous year 22-23, he disclosed the following information. So, income from business in India, income from business in country A, with which India does not have agreement, 15 lakhs. Income tax levied by government in country A, 5 lakhs. Loss from business in country B, with which also India does not have agreement for avoidance of double taxation. Contribution to public provident fund. Payment of life insurance premium on the life of his father and mother. Okay, so Arvind, he has given you full information. Now you are supposed to calculate. So whatever from different countries you are earning, no, add all those, whether it is income or loss, you add all those things, you'll get gross total income. After that, you are also paying premium, right? So that also you can take a deduction of. So now you have a net total income, that is taxable income, of 36 lakh 50,000. On that you can calculate your taxation. 36 lakh 50,000, you please calculate your taxation. I'll help you for that. So up to here it is exempt, right? Up to here it is 12 lakh 50,000, 12,500. Now we have 36 lakh 50,000. So next slab is 5 lakh, 5 lakh to 10 lakhs. Okay, 5 lakh to 10 lakhs. 5% here you are paying on 5 lakh rupees, you will be paying 20%. Then you have anything above 10 lakh rupees. So that is 36 lakhs 50,000. Okay, above 10 lakh rupees. So that will give you 2650 into 30%, into 30%. So if you total this up, you'll get 9 lakh 7,500 as your tax. On that, education says, okay, that will give you 9 lakh 43,000. Now you have to calculate your average tax rate, Indian average tax rate. So your tax 9 lakh 43 upon income into 100, that will give you average tax rate plus tax already paid in different country, whichever is lower, that will be your relief. A quick read, then we'll go for illustration 5. Let us take illustration 5. Amar, an individual, a resident of India, receives the following payments after TDS during previous year 22-23. So you have professional fees on 17th August 22, 2 lakh 40,000. Professional fees on 4th March 23, 1 lakh 60,000. Both the above services were rendered in country X, on which TDS of rupees 50,000 and 30,000 respectively has been deducted. He had incurred an expenditure of rupees 2 lakh 40,000 for earning both these receipts and income.
His income from other sources in India is rupees 5 lakhs, and he has made a payment of 70,000 towards LIC. Compute tax liability of Amar and also the relief under section 91. It is quite easy. You just have to take your both the incomes, 2 lakh 6, 2 lakh 40 and 1 lakh 60. Okay, whatever income you have, you add all your income, deduct your expenses. Okay, these are your expenses. So you deduct your expenses, you will get income from profession in India. That is 2 lakh 40,000. 4 lakh 80,000 is your income from profession in foreign country. Out of that, you please remove your for expenses which you have paid. If you will remove that, you will get a net income. To that, you add income earned in India. Okay, you will get gross total income given to you in the question. Given to you in the question, 5 lakh rupees, 2 lakh 40,000 is your expenditure, 50,000 is your TDS. Okay, everything is given to you in the question. Now you deduct your ATC. Okay, after that, you will get 6 lakh 70,000. Calculate taxation, you will get your answer. Taxation and the relief rate.